In the last class, we were talking about the properties of data warehouse architecture, right? But I have gone through the question asked in the last lecture. It's very nice that it's very good that many of you have attempted the question and answered it correctly. But still, some students who are not actually attempted the question, so that is not good. Okay, so you should attempt the questions that have been asked in the lecture. So let's start the class. So we were talking about the properties of data warehouse architecture. First, we have seen separation, then scalability, then extensibility. Now coming to the next one, that is security. So monitoring accesses are necessary because of the strategic data stored in the data warehouse. So I hope we don't need to again discuss this security feature. You all know that security should be implemented because these data are very important and confidential with respect to that particular company. Then next property we have administrability. So data management should not be complicated. That is what this property says. So overall, we have seen separation, scalability, extensibility, security, and administrability as the properties of data warehouse architecture. Right. Now today we'll discuss a very important topic, that is approaches for data warehouse construction. Okay, so how we go for constructing the data warehouse. ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि types. I'm not talking about the types. I'm talking about approaches. जब भी आप data warehouse construct करने जाओगे तो आप क्या क्या approaches लोगे, ठीक है? So of course we have two approaches, that is top-down approach and bottom-up approach. Okay, and they have been termed with different names with respect to the scientists who have proposed these structures. Okay, these approaches. So first, coming to the top-down approach. I hope you already know or you are already familiar with this top-down approach and bottom-up approach terms in your programming classes. Okay, so let's discuss the first one, that is the top-down approach. Well, so look at this figure first. इस फिगर को अच्छे से देखिए. So you may take a screenshot of this also. I hope that all the terms that are being used in this figure, I have discussed them already, right? So इस approach को, इस figure को अभी अच्छे से देखिए आप लोग और मुझे बताइए why I am calling it as top-down approach of constructing the data warehouse, right? In the last lecture, we discussed about the ETL. I asked a question in the lecture also that what is ETL, sorry. Then staging area is also discussed. Then a very important data mart that is also been discussed. Now, I hope all the terms are now familiar to you. Now, try to analyze that how this comes out to be a top-down approach. Sir, the diagram is not visible. Diagram is not visible. No, sir. Sir, here it's showing the properties of data warehouse architecture. Oh, I think network problem or whatever it is, because I'm just showing you the diagram in the slide actually. But it is other guys. Have you seen this diagram now? Is it visible? No, sir. No, sir. No, sir. No. No, no, sir. No, sir. What is that slide that you are now means that is visible to you? Properties of data warehouse architecture. Properties of the tower. Okay. Now? No, sir. I think again university network problem. I need to connect it No. to my. Okay.
Just a minute. Well, now is it visible? Is it visible now? Yes, Yes, sir. sir. it's visible. Yes. It Yes, is sir. visible now? Okay, Yes, now sir. look at this figure. See, you have seen that external sources are there, then staging area is there, then data warehouse, data mart, data mining, right? So, what I'm asking actually, I call it as a top-down approach of constructing the data warehouse, right? How it comes out to be the top-down approach? Can anybody means have any idea, guess any idea regarding this? Yes, sir. After Sir, the because we are building of the data warehouse, from the data warehouse, the data mart will be divided. Then it will build. First, the data Very good. warehouse will be built. Okay, okay. Sir, because Good. That, the data is taken from different sources. So if we Mhm. don't get the data, we can't do the processing and cleaning part. Then send it to the data warehouse, then data mart, and do all the process. Okay. Next. Sir, same as Kashavi told. Okay. आरो कुनुबाई कोबा कोई और बताना So जब चाहेंगे तक इसके डेटा वेयरहाउस में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा तब तक डेटा मार्ट में भी नहीं जाएगा। जब तक इंफॉर्मेशन डेटा वेयरहाउस एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं लेगा तब तक डेटाबेस में इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। उस तरह काम करेगा ये। ओके तो फिर मैं इसको क्यों टॉप डाउन अप्रोच बोल रहा हूँ? Have you got my question that why I am calling it as top down approach? Sir, because the data are coming from many Oh. sources and they are going to a It single is from mining is done single. Okay, good. Now I come to discuss these things. See, in this figure you have seen, first we have external sources जो होना ही चाहिए क्योंकि आपको डाटा वेयरहाउस में डाटा लाने के लिए अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा कैरी आउट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद आपने देखा कि ETL प्रोसेस के जरिए, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और लोड कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारे चीज़ के लिए आप स्टेजिंग एरिया पे डिपेंडेंट हो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डेटा वेयरहाउस के बाद आप उसका सबसेट क्रिएट कर रहे हो। उस सबसेट को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द सबसेट ऑफ डेटा वेयरहाउस? Data mart. व्हाट इज द नेम? Data mart. राइट राइट राइट। Data mart. ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस का सबसेट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है डेटा मार्ट। अलग अलग डेटा मार्ट हो सकते हैं, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द डेटा माइनिंग पार्ट that we will discuss later because data mining is used for knowledge extraction part. Okay, now up to now I hope this is clear. Again I am explaining external sources. We are collecting the data. We have been gone through the ETL process, the staging portion. The staging area is being used for this. Then data being loaded to the data warehouse. Then we are constructing data mart, right? That's how the top-down approach works. Let me show you one more figure to you. Now is this figure visible to you? Yes sir. Okay, so ऊपर देखो, at the top what I have written, Inmon's top-down approach, right? मैंने यहाँ पे Inmon's top-down approach लिखा हूँ, right? क्योंकि Yes sir. इस जो ये जो अप्रोच है, टॉप डाउन जो अप्रोच है, दिस टॉप डाउन अप्रोच बीन डिजाइन, दिस प्रोपोज बाय द साइंटिस्ट इनमॉन। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे मे आस्क यू दैट व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व
in the Inmon's approach of data warehouse construction, right? There may not be the term top-down will be given to you. By just simply giving the term Inmon, they will ask you to write the stages. So now अभी आपको समझ में आ रहा है कि Inmon's top-down approach को ही हम top-down approach of data warehouse construction बोलते हैं. इसमें एक important चीज है. What is the important thing is that here we are constructing the data mart after we are loading the data in the data warehouse, right? So after the ETL process, we have loaded the data in the data warehouse, and then we are dividing into different subsets. As that is, this is the common or default approach. You can say data marts are being created. तो ये Inmon's approach है. फिर से इस फिगर को देखो. Source systems, then extract data to the stage. Stage means the staging area, right? Then data warehouse. Then we are creating the data mart. Okay. Now, if we write the stages, then what would happen? You will see that in the case of this top-down approach, what are the important components? External sources, staging area, data warehouse, data mart, and data mining. Okay. So external source, you already know what is external source. So these external sources data may be structured, semi-structured, even unstructured. Stage area where we are performing that cleansing. Then data warehouse, no need to say again. Okay, so then we have data mart. Data mart in the last lecture I have discussed what is data mart. Okay, then data mining. We will discuss this data mining because after the first module will be finished, because the rest of the module is for only data mining. Okay, so the practice of analyzing the big data present in data warehouse is the data mining. It is used to find the hidden patterns that are present in the database or in data warehouse with the help of different algorithms that we use in machine learning or data mining, right? So ये components है. Overall, how this approach works. This approach works on the basis of that first you load the data into the data warehouse, then you are constructing the data mart out of it. So Inmon ने कैसे define किया था इस approach को? How Inmon defined this approach? He defined data warehouse as a central repository for the complete organization, and data marts are created from it after the complete data warehouse has been created. इस slide का आप एक screenshot ले सकते हैं. You can take a screenshot of this slide. Now, read this definition again. Can you tell me what is that important point that you will find in this definition? ये definition को अच्छे से देखो आप लोग और मुझे बताओ कि इस definition में जो मैंने अभी बता दिया कि top down approach कैसे काम करता है, फिर भी इस definition को देख के क्या बता सकते हो कि वो fact क्या है जो सबसे important है और जो सबसे ज़्यादा focus किया जा रहा है इसमें? Sir, after all the cleaning is done and stored in data warehouse, after that, the information in data warehouse are being divided into different marts based on different topic, different parts. Like from, it may be about employee, or it may be about salary. Different approaches are taken. Okay, good. You have already got this top-down approach. Okay. Now I want you to read the definition again. What you have said is really correct, but still one term is missing. Please find out that term. So central repository, the information will be available only on central repository. Very good. Who is that? Sir Ankit. Ankit, you are absolutely correct. So this approach, thank you. This approach actually consider the data warehouse as a central repository, right? This means what? We have created this data warehouse as a central repository for the complete organization, और उसके बाद
depending on the requirements, we are creating the different data marts. So in this definition, what you have to note out that the Inmon's top-down approach consider data warehouse as a central repository. Okay, okay. Now, what will be the advantages of this top-down approach? इस top-down approach का क्या-क्या advantages होगा? So, see that data marts are created from the data warehouse, and it will provide, those data marts will provide consistent dimensional view of the data marts. Means what happened? Data warehouse में आपने data रख लिया और आपको ये चीज पता है कि data warehouse में हम क्या करते हैं? We are focusing on the multi-dimensional view. And what is multi-dimensional view? We'll discuss again in another topic of data warehouse. Okay, but still I'm giving you an overview that here every attribute we are considering them as a different dimension. ठीक है? जैसे आप एक छोटा सा टेबल लेता हूँ, आपका स्टूडेंट टेबल है, उसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, right? Then suppose student address है, so I can consider student ID, student name, and student address as three different or separate dimensions. But why I am doing this? Because if I am considering like that, and then it will be very easy to actually analyze the data present in that table. What I mean to say that if we increase the dimension, then it will help us to more efficiently or accurately analyze the data. So यहाँ data marts को कब create किया गया है? जब आप already data warehouse में रखे हो data, और जब आपने data warehouse में रख दिया है data, तो आप उस data को multi-dimensionally view कर सकते हो. तो उसके बाद आपको डेटा मार्ट क्रिएट करने के लिए आसान हो जाएगा, राइट और रॉन्ग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैव ए मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ दोस डेटा, सो यू कैन इजीली गो फॉर क्रिएटिंग सेपरेट डेटा मार्ट्स आउट ऑफ इट. So that is the advantage of the top-down approach. Okay. Then next, it says that this model is considered as the strongest model for business changes. And that's why many big organizations actually prefer this approach. And you all know that creating data mart from the data warehouse in this case is very easy because you already have the multi-dimensional view of those data, right? So ये the top-down approaches का advantage है. ये आपको समझ में आ गया? Now, if these are the advantages, can you tell me, is there any disadvantage of this Inmon's top-down approach? क्या कोई मुझे एक disadvantage बता पाएंगे इस top-down approach का, Inmon's top-down approach का? Sir, the data will be on the only one central repository. So to handle the data, it will take much time, and it will be not so easy, sir. To create the data mart, it will be not so easy because from one central repository to when we design the different database, it will be time consuming. Right. ठीक है. तो ओवरऑल अगर मैं एक टेक्निकल टर्म इसके लिए यूज करूंगा तो क्या होगा? If I am going to use one technical term for this, what will be that term? Cost. Okay, cost will be higher in this case, and of course time complexity will be more in this case. Okay, because you need to again design and maintain those data marts out of it. Yeah, it is those data in the data warehouse, as we have a multi-dimensional view of them, so that will help you to create the data mart. But still, it's going to take some time, right? It's obviously it will cost more. So that is only one disadvantage of this top-down approach. Otherwise, we maximum times prefer this approach because advantages are more in this case. Great. So
डाउन अप्रोच सबको क्लियर हो गया तो मैं बॉटम अप अप्रोच में जाऊंगा Sir, doubt এটা আছে কোৱা Sir, data warehouse বা data martsত data খিনি transfer হৈ যায় নে data marts টো অকল view কৰিবলৈ use কৰে user different মানে top different মানে হেৰি যি দৰকাৰ হয় user সেইমতে data marts বোৰ divide হৈ যায় তো data marts data খিনি store হয় নে view অকল view কাৰণে use কৰে main user purpose is view of course okay main purpose is view because you already have those repository with you now you are separating them as per the need okay as per the requirement suppose what are the different means requirements like sales marketing okay so main purpose what we are using for this data marts is the view but still आपको क्या करना पड़ेगा you need to organize them okay when you are organizing them okay so that is again going to take some time that is again going to cost you okay cost you in terms of suppose effort in terms of time so that's why actually this approach only one disadvantage you will get that it will consume more time otherwise it is same because data marts we are using mainly for the viewing the data in a separate way in a you can say multi-dimensional way right so that is what actually the data marts used for ओके ये बात ऐसा नहीं है कि डेटा मार्ट में बॉटम अप अप्रोच में यूज नहीं करूंगा डेटा मार्ट का काम ही है क्या करना आपके डेटा को सेपरेटली उसको आपको बताना ठीक है यू विल बी प्रेजेंटेड द डिफरेंट व्यूज ऑफ द डिफरेंट डाटा एज पर द रिक्वायरमेंट बट इसको आप कब कर रहे हो आफ्टर स्टोरिंग द डाटा आफ्टर लोडिंग द डाटा इन दैट डेटा मार्ट अगेन यू आर यूजिंग द ETL प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपने डाटा वेयर हाउस में रख दिया और काम खत्म आपको फिर से उसको सेपरेटली चेंज करके उसको फिर से लोड करना पड़ेगा अलग अलग डाटा मार्ट में ठीक है आपको मैं फिर से ये डायग्राम बता देता हूँ आई एम शोइंग यू द डायग्राम अगेन लुक एट दिस डायग्राम you will automatically get the answer of the question that you have asked इस डायग्राम को फिर से एक बार आप देखिए तब आपको अपने आप ये आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का कमिंग ये डायग्राम पे सुना आपको see store systems this is ETL process again you see ETL process so ETL process means what ETL process stands for so cleaning the data no so ETL, load কৰি transfer কৰি মানে transform কৰি দিয়ে data to staging area use কৰি right but ETL extract transform means again you are extracting data from the data warehouse you are transforming it and loading it in the data mart okay अगर आप सिर्फ मतलब आप लोड ही नहीं करते तो आप क्या होता आप डायरेक्ट डाटा वेयरहाउस से एनालिटिकल टूल्स यूज करके कर रहे हो बट आप एक्स्ट्रा डाटा आप डाटा मार्ट में लोड कर रहे हो हाँ that is okay that we are using the data mart only for the viewing purpose only to have a separate view of those data but you are again going through the ETL process ठीक है now you tell me whether this is clear or not Sir, but by chance যদি data mart to যদি down হৈ যায় বা যেনিবা sales যি requirements খিনি লাগে user তাহাঁতি যদি নেপায় তেতিয়া data mart তো কাম নহব ন হেতু data mart যোনটো sales কাৰণে বনোৱা আছে হেতুটো use কৰিব নোৱাৰিব ন user তে কি direct data warehouse পৰা use কৰিব নোৱাৰিব ন see data for this for the answer of this question again I want you to come back to the first different structures so তোমালোকে কি দেখিছিলা what you have seen data merge come only at the third type of the data warehouse architecture right or wrong এইটো 3 নম্বৰ টাইপ আছিল data warehouse architecture with staging area and data mart you do mind it that data mart is not a mandatory part of data warehouse
अगर आप ये चीज अफोर्ड कर सकते हो, if you can afford this, then only you go for creating data marts. Overall, you are loading the data in the data warehouse. अगर आपको उस data warehouse से data को अलग अलग extract करके as per the needs आप उसको group wise सजा रहे हो, ठीक है, group wise रख रहे हो, तभी data mart यूज कर रहे हो. नहीं तो हम पहले क्या यूज करते थे? Data architecture of a data warehouse which is staging area. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको data mart दिखाई दे रहा है? Have you seen the No, sir. data mart in this No, sir. architecture? No, this is the second type. Again, let me show you the first one. Now, this is the basic data warehouse architecture. Have you seen the data mart here? No, sir. That's it. So, ইয়াৰ মানে হৈছে যদি তুমি এফোর্ড কৰিব পাৰা, যদি তুমি বেলেগে suppose এখন university, if you have that infrastructure to have separate departments, then only you will organize those different parts within that department. Means to say that IT department में आप ये सारे चीज लगेगा तो IT department में रखोगे, आप CSC में जो चीज लगेगा CSC में रखोगे. अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप क्या वो बनाओगे? नो, राइट और रॉन्ग? तो ये Yes, sir. ओवरऑल आप क्या कर रहे हो? एज पार्ट ऑफ नीड आप इसको बना रहे हो, ठीक है. तो इस टाइप से आपको 3 टाइप का डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर मिला, और जो लास्ट वाला है वहां पे हम यूज कर रहे हैं डाटा मार्ट. So means to say that data mart is not a mandatory part of the data warehouse. That's all. Okay. जब आप अफोर्ड करोगे तब कर सकते हो. और अगर data mart में suppose just like your question, this downs, you have already have the data in the data warehouse, right? You are collecting it from different sources. Okay. You are extracting and separately keeping them in the cells. तो ये अगर कुछ disaster happen होगा, obviously we have the replica for those data. So from those replica, you can retrieve that, right? So, so if the management is in that way, okay, then you are not going to lose your data. Okay. Okay, sir. Now I hope this top-down approach is very much clear to you, Yes, sir. right? Okay. Can I come to the bottom-up approach? So I'm coming to the bottom-up approach. Now look at this figure. आप इस फिगर को अच्छे से देखो आप लोग. I'll take the class up to 11 a.m. Is there any problem with that? No, sir. No, sir. No, sir. Thank you. तो मैं ये दोनों अप्रोच कंप्लीट करके आज छोड़ूंगा क्लास को, ठीक है. तो बॉटम अप अप्रोच का चार्ट को देखो आप लोग. सी एक्सटर्नल सोर्सेस. ना आप लोग देखो और मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है. Sir, আগতে staging area পৰা direct data warehouse লৈ গুচি যায়, but এইটোত staging area পৰা data mart পৰাহে গৈছে data warehouse ত. That's it. আৰু কোনোবাই ক'বা, is there anyone else who wants to answer this question? Okay. আৰু কোনোবাই ক'বা, is there anyone else? No one else. Okay. So bottom-up approach, you have seen different external sources, right? Staging area, and from the staging area itself, we are creating the data mart. Am I audible now? Yes, पाया sir. ऐसा मुक? हाँ. मैंने Yes, बहुत sir. सुना पाना है जी. Okay. Anyway, so
यहाँ पे हमने डाटा मार्ट को पहले क्रिएट किया है, उसके बाद डाटा वेयरहाउस में लोड किया है, उसके बाद डाटा माइनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, सो लेट मी शो यू वन मोर फिगर फॉर यू। सी व्हाट आई हैव रिटन हियर। मैंने क्या लिखा है इसमें बोल सकते हो? Ankit, what I have written here? Kimball's approach. Right. So this bottom-up approach of data warehouse architecture being proposed by Kimball. So with his name, this approach is also known as Kimball's approach. ठीक है? So what is the difference here? Sorry. Here you are creating the data mart before the data warehouse being created. Okay. So इसमें क्या हुआ था? From the data warehouse, you are creating the data marts in the top-down approach or Inmon's approach. Now, opposite thing, that is from the data marts data, you are creating the data warehouse. ठीक है? So now, in this approach, what will be the stages? First, the data is extracted from the different external sources, right? This part is same as we have in case of top-down approach. Then data go through the staging area and loaded into the data marts instead of the data warehouse. Means to say that data marts are created first and provide that reporting capability. Then it addresses the single business area. Then these data marts are then we integrate it into the data warehouse. ठीक है? तो ये तीन अप्रोच मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे हम फिर से एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो कि टॉप डाउन अप्रोच में भी हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेजिंग एरिया से क्लिनसिंग पार्ट करने के बाद हम डाटा मार्ट बनाया है, इसको लोड किया है डाटा मार्ट में। ठीक है, तो डाटा मार्ट को पहले बनाया, उसके बाद क्या हो गया, डाटा मार्ट के पास ये कैपेबिलिटी हो गया कि वो एक एक सिंगल बिजनेस एरिया को कंसर्न कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो उसके बाद उस सारे डाटा मार्ट्स को हम इंटीग्रेट करके डाटा वेयरहाउस बनाए। ठीक है, नाउ Kimball has proposed this approach. Okay, sorry, this is Kimball. Okay, not Kimball. So he has proposed this approach. So according to him, just I have stated here, data marts are created first and then provides a clean view for the analysis, and then data warehouse is created after completing those data marts. Right. So what will be the advantages of the bottom-up approach? आप अपनी तरफ से बताओ कोई एक एडवांटेज जो हमें बॉटम अप अप्रोच से मिलेगा, जो हमें टॉप डाउन अप्रोच से नहीं मिल पाएगा। कैन यू टेल मी वन एडवांटेज ऑफ दिस बॉटम अप अप्रोच, okay, which we may not get from top down approach? So cost and time. One by one, please. So Sir, cost the and cost will time. be involved will be less, because sir, at the initial phase only the subset will be created. It is the data mart. So the managing will be easy. The managing will be easy, and to handle the subset will be easy. To handle the subset. So the time consuming will be less, and also the cost because of the maintenance. Why the time will be less in this case? Because the data will be already organized in the data marts, so it will be easy to access, and then time will, that's why they will be taken low. That's Right. Okay. I have got two approaches correctly. I want more responses from you. कितने students हैं अभी? How many students we have now? 42. I want at least 20 responses. And I have not got the responses from all the 42 participants in the last
questions, last lecture's questions. Okay. Today I am going to ask question for this lecture. Okay, and you all have to respond them. And 4 students, Raju, Jyoti, Kashavi, and Ankit, you will monitor these things, right? So, कोई और बता पाएंगे बॉटम अप अप्रोच का क्या एडवांटेज है? Okay. So data marts are created first, so reports can be quickly generated. ठीक है, डाटा मार्ट्स को हमने पहले क्रिएट कर लिया है, तो डाटा मार्ट्स कैन एड्रेस एवरी सिंगल बिजनेस एरिया, राइट? So we can generate the reports quickly. Then we can accommodate more number of data marts here, and in this way, data warehouse can be extended. Then the cost and the time taken in this model is low because we already have the data marts organized. We are now integrating them into the data warehouse. So comparatively, this bottom-up approach consumes less time than the same taken by the top-down approach. ठीक है, ये advantages है. Now, can you tell me one disadvantage of this bottom-up approach? Sir, this bottom-up approach is applicable only for a small group of organization, because for the large organization, the top-down approach will be better. For the large organization, top-down approach will be better. Okay. If the data marts will go down, then the extraction of data will be tough. We will not be able to extract the data from there to the warehouse, to load the data into the warehouse. Sir, because আগৰটোত data warehouse already stored থাকে, so ইয়াততো একো backup নাথাকিব ন sir, যদি data mart এটা down হৈ যায়. Okay. Almost reached, but now I'm showing you the disadvantage of this approach. এটো পঢ়া ভালকে. Okay, read this statement. Now, after reading this statement, that this model is not strong as top-down approach, as dimensional view of data marts is not consistent as it is in the top-down approach. तो ये पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? What have you got from this? याद है मैंने टॉप डाउन अप्रोच में क्या कहा था? आपने डेटा वेयरहाउस में डेटा रखा, मीन्स आपके पास एक एडवांटेज है. वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ दोस डेटा, राइट और रॉन्ग? Yes or no? Yes sir. बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पहले डेटा मार्ट बनाया है, उसके बाद हमने वो डेटा को लोड किया है कहाँ पे? डेटा वेयरहाउस में. ठीक है, तो can you tell me that whether these two things same or there exists some difference? Sir, there lies difference. Right, they are different. They are different approaches. Okay, so यहाँ पे ये जो है is not strong. क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा कि ये जो बॉटम अप अप्रोच है टॉप डाउन के बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो क्यों? Why this is not consistent? Come on, think. This is not fair, guys. You are more than 40. Only a few students are responding. They are very sincere, but you also try to be sincere. Raju, आप आज क्लास में हो? Are you there, Raju? Yes, sir. I can see you. Okay, I want response from you also. Then there are many guys I know. I think I have. I think MSc IT is also here, no? MSc IT and MCA students are there.
So are you there or not? শুনি আছা তোমালোকে? Give some response. सर आपका जो फर्स्ट टॉप डाउन में था सर, सब आपका डाटा वेयर हाउस को हम लोग अपने एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी हुआ था, तो उसका मतलब है सर सब डाटा उसमें पहले स्टोर हुआ है। लेकिन जो हम लोग का बॉटम अप में है सर, उसमें डाटा मार्ट से फिल्टर होके सर वापस से होके जा रहा है ना लोड सर, मतलब डाटा वगैरह, मतलब ETL प्रोसेस डाटा मार्ट से पहले होगा, तो मतलब कुछ डाटा ऐसा हो सकता है जो लॉस हो सकता है सर, आई गेस। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिखा भी हूँ कि एक केस में आपका मल्टी डायमेंशनल क्या है, आप क्या कर सकते हो, डेटा वेयरहाउस में रखा तो यू कैन हैव ए मल्टी डायमेंशनल व्यू, राइट। सो अगर आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू हो आपके पास है तो आप आसानी से डेटा मार्ट बना पाओगे, ठीक है। और उस डेटा मार्ट में आप जो ETL प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, डेटा लोड करोगे, राइट और रॉन्ग। बट यहाँ पे पहले ही आपने ये चीज कर लिया, ठीक है। तो इसमें ये मल्टी डायमेंशनल व्यू बाद में आ रहा है, पहले आपके पास डेटा मार्ट है और डेटा मार्ट से वो डेटा ला रहे हो डेटा वेयरहाउस में। सो दिस थिंग इज नॉट कंसिस्टेंट एंड दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो यही डिसएडवांटेज बॉटम अप अप्रोच में है, राइट। See, now what I have showing you now, data mart within the data warehouse. यहाँ पे इस फिगर में ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। डेटा मार्ट पहले ही आपने बना लिया है, राइट। उसके बाद डेटा वेयरहाउस बनाया। यही नहीं करके हमने अगर डेटा वेयरहाउस को पहले बनाया होते, डेटा वेयरहाउस में ETL करके लोड करके आप डेटा मार्ट में डेटा लोड करते, तो आपको क्या होता, आपका मोर कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आइडिया है about the different properties, about the different attributes of those data, right? You know the different dimensions of the data, and as per the different dimension that of the data are concerned, so you can easily separate those data into different data marts. You can easily load them into different data, right? So that is the main disadvantage of bottom-up approach. Okay? Now, लुक एट दिस फिगर। आप इस फिगर को देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो? यस सर। Yes, sir. सो इनमॉन वर्सेस किम्बल। यहाँ पे जो OLAP क्यूब लिखा हो वो छोड़ दो, उसको बस आप लोग इसे ऐसे ट्रीट करो कि ये मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ द डेटा है। मैंने क्या कहा? दिस इज ए मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ द डेटा। OLAP क्यूब को छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन सम क्लासेस। सो यहाँ तक देखो आप, ओके, ठीक है। तो OLTP ऑनलाइन transaction processing, I will discuss this thing, but you just see that these are the different data sources, right? We are creating data mart. यहाँ पे मैंने और एक चीज लिखा है 3NF। क्यों लिखा है? Can you tell me? Can anybody tell me? I think you have attended my DBMS lecture. वहाँ पे मैंने कुछ बताया था, शायद याद हो तो। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि we are trying to maintain up to 3NF. So what is this 3NF here? So transitive dependency থাকিব নালাগে tables মাজত। Right. Transitive dependency की केनेকুৱা आছিলে? बाकी बिलाके बुझी पाया सा? All of you are others. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमने 3NF लिखा है, डेटा मार्ट, राइट। 3NF के बाद आपके पास डेटा वेयरहाउस। ये कौन सा अप्रोच है आपका? किम्बल्स अप्रोच लिखा है हमने, ठीक है। और इनमॉन्स अप्रोच में देखो, डेटा सोर्सेज से OLTP को भी भूल जाओ, बस ये इसको ट्रीट करो एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज। वहाँ से हमने डेटा वेयरहाउस में डेटा लाया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? डेटा मार्ट क्रिएट कर रहे हो। योर OLTP ट्यूब, इसको छोड़ो, मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। Now,
I'm going to ask you one question for this lecture. I'll keep this as an assignment for you, that after getting the recorded lecture, all of you give your views on that question. That after looking at this figure, what differences you have seen between Inmon approach and Kimball approach? Are you getting my question? इस फिगर को देखने के बाद, और जो मैंने अभी बताया कि इनमॉन से अप्रोच किया था, मैंने टॉप डाउन अप्रोच किया था, बॉटम अप अप्रोच किया था, किम्बेल से अप्रोच मतलब बॉटम अप अप्रोच किया था, तो इस फिगर को आप लोग देखोगे, बस ये OLTP को भूल जाओ और OLAP को भूल जाओ. OLTP को आप ट्रीट करो एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज और OLAP को ट्रीट करो मल्टी डायमेंशनल व्यू. उसके अलावा बाकी सब सेम है. तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि इनमॉन्स अप्रोच और किम्बॉल्स अप्रोच, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? हैव यू गॉट द क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. Okay. Yes. So this time I want the responses from all these 41 students. Not that only the few students are giving the responses. And Raju, Jyoti, Kashyapi, and Ankit, you guys properly mentor this fact. You'll let me know that who are not responding. Okay? बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सभी लोग इसको देखोगे और अच्छे से जवाब दोगे अपना व्यू पॉइंट्स. There will be no such things like copy paste. You will give me your point of view on that. Okay, right? Yes, sir. So Yes, sir. आज के लिए क्लास ठीक है? Can I terminate this class now? If you got all the points that I have explained, then I think I can terminate the class. Okay? Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir.